गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है वंस अगेन इन दिस चैनल वेयर यू आर स्टडिंग अबाउट वेरियस टाइप्स क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व देम एंड लर्न एवरीथिंग। सो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। पॉलिटी से जुड़ा हुआ सारा सवाल होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्टैटिक्स प्रश्न है, हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला जल्दी नहीं है। ओके, लेट्स सी। Consider the following statement: majority party rule, dual executive, absolute separation of power और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फीचर्स है, कौन सा फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो मेजोरिटी पार्टी रूल करता है, उसके बाद लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है, यस। डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, जी हाँ। तो इसमें तीन तो गलत है डेफिनेट, क्योंकि एब्सोल्यूट सेपरेशन पार्लियामेंट्री फीचर्स नहीं होता। तीन अगर जानते हैं तो बाकी अब नहीं भी जानते तो चले। तो तीन छाटिए, घर ले जाइए आंसर उठा के सी को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, दोनों जगह। आर्टिकल 74 and 75 deals with the parliamentary system at the center, and Article 163 and 164 deals the parliamentary form in the state levels. Some of the principles, some of the features of the parliamentary government. Let's see. In India, okay. सबसे पहले मेजोरिटी पार्टी रूल, द पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर मेजोरिटी सीट इन लोकसभा, जिसको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं ना, एक जादुई आंकड़ा 274 का, उसी को जिसके पास हो, दिस इज द सिक्योर मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ द पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। Other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. However, when no single party, अगर किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कोalition गवर्नमेंट बनाने का भी उपाय होता है। A coalition of the parties may be invited by the president to form the government. डबल मेंबरशिप की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, मिनिस्टर आर द मेंबर्स ऑफ बोथ, लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होते हैं। इसका क्या मतलब है? That a person cannot be a minister without being a member of the parliament. Okay, the constitution stipulates that a minister who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister. 6 महीने तक जी लीजिए अपनी जिंदगी, उसके बाद तो you are will be far out, आपको बाहर कर दिया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, देखिए डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का मतलब होता है विघटन। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा जिसको बोलते हैं, कैन बी डिजोल्व। ध्यान रहे, पार्लियामेंट को डिजोल्व नहीं करते हैं, लोकसभा को डिजोल्व करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। In other words, the prime minister can advise the president to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term and hold the fresh election. चाहे तो before the term of expiry, समय की अवधि के पहले भी वो फ्रेश इलेक्शन कराने के लिए बोलेंगे डिसोल्यूशन कर दीजिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि एग्जीक्यूटिव enjoy to right to get the legislature dissolved in a parliamentary system. Absolute separation of power is the feature of the presidential form of the government. ठीक है, the doctrine of separation of powers is the basic of the American presidential system. ये जो doctrine of separation of the powers is the basic feature of the American presidential system. The legislative, the executive, the judicial power of the government are separated and vested in the 3 independent organs of the governments. Next question. Which of the following is are the merits of the parliamentary form of government? क्या क्या अच्छा गुण है? सबसे पहली बात, हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म और डेफिनेटनेस इन पॉलिसी। ये तो गलत बात है, अनिश्चितता होता है, डेफिनेट नहीं होता है। 1 और 2 आप मान सकते हैं सही। चलिए, इसका सही जवाब 1 और 2 है। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ फॉलोइंग मेरिट्स: हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका के बीच बहुत अच्छा तालमेल होता है, क्योंकि कहाँ से आते हैं ये जो एग्जीक्यूटिव, वो तो विधायिका से ही आते हैं। मतलब एक तरह से चोर मौसेरा भाई कर सकते हैं आप। द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट इट इंश्योर
harmonious relationship and cooperation between the legislative and the executive organ of the government. The executive is a part of the legislature and both are interdependent and work. As a result, there is less scope for disputes and conflicts between the two organs, prevents despotism. Under this system, the executive authority is vested in a group of individuals, Council of Ministers. Under this system, the executive authority is vested in a group of individual, council of minister, and not in a single person. ठीक है? The dispersal of authority checks the dictatorial tendencies of the executive. Moreover, the executive is responsible to a parliament and can be removed by no confidence motion. तो ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, हालांकि यहाँ पार्लियामेंट शब्द गलत है, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होना चाहिए। संसद के प्रति कहाँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है वो ना, यही स्टेटमेंट उठा के दे दिया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इज इट राइट और रॉन्ग? कैन बी रिमूव बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन। वन ऑफ द डिमेरिट्स of the parliamentary government is that there is no continuity of policy. The parliamentary system is not conducive for the formulation and the implementation of long-term policy. This is due to uncertainty of the tenure of the government. A change in the ruling party is usually followed by changes in the policy of the government. Generally देखा गया है सरकार बदली तो नीतियाँ बदल गई। Which of the following is a bedrock principle of parliamentary? Bedrock principle. It's a collective responsibility. Yes. देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा मतलब होता है हम तो डूबेंगे सनम लेकिन साथ साथ डूबेंगे, हम तैरेंगे भी सनम लेकिन साथ साथ तैरेंगे। मतलब वी सिंक टुगेदर, वी ड्रॉन टुगेदर, वी स्विम टुगेदर, वी ड्रॉन टुगेदर। बहुत अच्छा लाइन है, आप इस्तेमाल कर लिया कहीं भी। द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द bedrock प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो bedrock होता है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी है, समझिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पार्टिकुलर। जनरल तो वो संसद के प्रति, लेकिन अगर सही रूप से कहा जाए तो 75 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दे एक्ट एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर, लिखा हुआ है तो स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक टीम की तरह काम करते हैं, तैरते भी साथ में है और डूबते भी साथ में है। द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्रीज, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, हटाइए प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर। अब हम लोग आते हैं फेडरल फीचर्स के बारे में। संघात्मक व्यवस्था of the constitution, flexible constitution, written constitution, supremacy of the constitution, states not indestructible। फेडरल फीचर में तो स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टेबल है भाई, स्टेट को तोड़ा जा सकता है, छोटा बड़ा किया जा सकता है। फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संदर्भ में मत सोचिएगा वरना गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम से सोचिए। फेडरल फीचर्स में क्या होता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो संविधान के अनुसार होता है, जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच बेहतर तालमेल होता है, चेक एंड बैलेंसेस होता है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फेडरल सिस्टम होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बल मिलेगा। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कहीं ना कहीं उस बात को एक तरह से ताकत देता है कि फेडरल फीचर्स बरकरार रहेगा, अदरवाइज एकात्मक संस्थात्मक व्यवस्था हो बहुत कम दिखता है। तो 2 और 3 डेफिनेटली है, तो 1 नंबर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए 2 और 3 के साथ जाइए, जहाँ 2-3 दिखे बी राइट। देखिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल, ध्यान दीजिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता, ये जो है फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन इंडेस्ट्रक्टेबल ऑफ द स्टेट, ये जो नॉन इंडेस्ट्रक्टेबल, राज्य को तोड़ा ही नहीं जा सकता है, वो यूनिटरी फीचर्स में आता है। Federal feature of the constitution, let's see something little. Written constitution in India, constitution is not only a written document but also the lengthiest document in the world. Originally it contained,
शुरुआत में 395 आर्टिकल, 1 प्रियम्बल, 22 भाग, 8 शेड्यूल। आज वर्तमान में 2019 में इसमें 470 से अधिक ज़्यादा आर्टिकल्स है, डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स है, 12 को शेड्यूल है। उसके बाद it specify the structure, organization, power, function of both the center, state government, and prescribe the limits within which they must operate. Thus, it avoids the misunderstanding. It avoids the misunderstanding and the disagreement between the two. Supremacy of the Constitution. Indian Constitution is the supreme or highest law of the land. Law enacted by the center and the state must conform to its provisions, otherwise they can be declared invalid by the Supreme Court or the High Courts through their power of judicial review. Thus, the organs of this government, like legislative, executive, judicial, at both levels, must operate within the jurisdiction of the prescribed Constitution. Unitary features of the Constitution: flexibility of the Constitution. The process of the Constitution amendment is less rigid than that what is found other federation. The bulk of the constitution can be amended by the unilateral action of the parliament, either by the simple majority or by the special majority. Further, the power to initiate an amendment of the to the constitution lies only within the center. In thus, इस प्रकार US the state can also propose an amendment to the constitution. States not indestructible. Unlike the other federation, the states in India have no right to territorial integrity. States का कोई territorial integrity नहीं है. The parliament can by unilateral action change the area, boundary, name, and state. Moreover, it requires only a simple majority and not a special majority. Hence, the Indian Federation is an indestructible union of the destructible state. याद रखिएगा, इंडियन फेडरेशन जो है ना वो indestructible union and of a destructible states है. फेडरेशन, ठीक है. American Federation, on the other hand, is described as the indestructible union and indestructible state. Indestructible union, indestructible state. Consider the following statement: emergency provisions, integrity judiciary, independent judiciary, ऑल इंडिया सर्विस, बाइकैमरल लेजिस्लेचर. अब फिर से पूछा जा रहा है इसमें यूनिटरी फीचर्स. तो यूनिटरी फीचर्स तो इमरजेंसी होगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड फीचर्स, इंडिपेंडेंस जुडिशरी तो नहीं हो सकता है, ऑल इंडिया सर्विस इंटीग्रिटी है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है. तो आप देखिए इसमें जो जानते हो उसको श्योर कीजिए ना. पहले सबसे पहले इंटीग्रिटी फीचर जो है, एक तो इमरजेंसी है, दूसरा एक और दो डेफिनेटली होगा आंसर में, और दूसरा ऑल इंडिया सर्विस. 1 2 4 भी लीजिए, 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन खोजिए. यस, सी इज द राइट आंसर. देखिए कुछ यूनिटरी फीचर्स बात कर लेते हैं हम लोग. जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. It converts the federal features, a federal structure, into the unitary structure without a formal amendment, without a formal amendment of the constitution. This kind of transformation is not found in any other the world, any other the further federation. किसी दुनिया के और किसी दूसरे फेडरेशन नहीं मिलता ऐसा गुण. Integrated judiciary. Indian constitution has established an integrated judicial system. Integrated judicial system. With the Supreme Court at the top level, state courts the below level. This single system of the courts enforce both the center laws as well as the state laws. Enforce both central laws and as well as state laws. In US, on the other hand, there is a double system of courts where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state law by the state judiciary. All India services. In US, federal गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज. यूएस की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में इन इंडिया ऑल्सो द सेंटर एंड द स्टेट हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज. बट इन एडिशन अपना अपना पब्लिक सर्विस तो है, बस इसके अलावा देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS, IPS, IFS which are common to both the center and the state. ये लोग जो IAS, IPS, IFS है जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, वो लोग वास्तव में ये ऑल इंडिया सर्विसेज है. ये स्टेट को भी सेवा देंगे, सेंटर को भी बाद में सेवा देंगे. द मेंबर्स ऑफ दिस सर्विसेज आर रिक्वायर्ड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर which also possesses unlimited control over them. Unlimited control हो जाता है. Thus, these services violate the principle of federalism under the Constitution. अब बात करते हैं फेडरल फीचर्स की. देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है इससे.
It constitutes an the Constitution establishes an independent judiciary headed by the Supreme Court for two purposes. Pahla, to protect the supremacy of the Constitution by exercising the power of judicial review, and second, to settle dispute between the center and the states or between the states. The Constitution contains various measures like the security of the tenure of the judges, fixed service condition, and so on to make the judiciary independent of the government. Bicameralism. The Constitution provides for a bicameralism legislature consisting of the upper house, Rajya Sabha, bicameral system consisting upper house, Rajya Sabha, lower house, Lok Sabha. Rajya Sabha represent the states of Indian Federation, while Lok Sabha represents the people of India as a whole. The Rajya Sabha, even though as a less powerful chamber, is required to maintain the federal equilibrium by protecting the interest of the states against the under undue interference of the center. Which of the following trends in the working of the Indian political system reflects the spirit of federalism? ध्यान से सुनिए कि which of the following trends is in the working of the Indian political system reflects the spirit of the federalism? Territorial dispute between the states. स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म का मतलब होता है, समझते हैं ना, दिखा रहा है एक तरह से, मतलब हमारे आत्मा आत्मा dispute between the states over the sharing of rising water, river water, emergence of regional parties and upcoming to the power, सबके सब स्टेटमेंट्स इसमें जनरल सी बातें हैं। मतलब एक तरह से संघात्मक व्यवस्था को मजबूत होता दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से संघात्मक व्यवस्था उभर कर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ट्रेंड्स, देयर आर सम फ्लोइंग ट्रेंड्स इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्ट इट्स फेडरल स्पिरिट। एक तो है सबसे पहला टेरिटरियल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल बिटवीन द महाराष्ट्र कर्नाटका ओवर बेलगाम। अभी हालगांव में चल रहा है बेलगांव मुद्दा, कि बेलगांव का जो मुद्दा है, बेलगांव किसका हिस्सा होना चाहिए। डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ओवर शेयरिंग रिवर वाटर, जैसे कि एग्जांपल कावेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, कावेरी वाटर आज से चल रहा है, 100 साल से चल रहा है। द emergence of regional the emergence of regional parties and their coming to power in a state like Andhra Pradesh, Tamil Nadu. The creation of new state to fulfill the regional aspiration, for the example Mizoram, Jharkhand. Demand of state for more financial grants from center to meet their development needs. Assertion of autonomy by the states and their resistance to the interferences from center. Supreme Court's imposition of several procedure in limitation of Article Use 356 President rule by the center. Consider the following statement regarding the national emergency. President can proclaim a national emergency only and only on the advice of the Prime Minister. ऐसा कुछ नहीं है. The proclamation of national emergency must be approved by both the houses of the parliament within the 2 months from the date of the issue. When approved by both the houses of the parliament, the national emergency continues for 6 months. सोचिए, एक और दो तो गलत है डेफिनेटली, तो इसका सही जवाब केवल 3 है। अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर a national emergency when the security of India or a part of its is threatened by the war, or by the external aggression, or by the armed rebellion. The President, however, can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. ध्यान रहे, from the cabinet, ये इंदिरा गांधी जी नहीं है कि रातों रात उठी और बोलिए घोषणा करो। नो, 44वें संविधान संशोधन के बाद तो बहुत मुश्किल हो गया emergency लगाना. This means that the emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet and not merely on the advice of the Prime Minister. In 1975, the Prime Minister Indira Gandhi advised the President to proclaim emergency without consulting her cabinet. The cabinet was informed of the proclamation after it was made. As a fact accompli, the 44th Constitutional Amendment Act 1972 introduced this safeguard to eliminate any possibility of the Prime Minister alone taking the decision in this regard. The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament within 1 month, and within 1 month from the date of the issue. Originally, the period allowed for the approval by the parliament was the 2 months, but was reduced by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. It approved by both the houses of the parliament. The emergency continues for 6 months. It can be extended to an indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months. These provisions for the periodically parliamentary approval
This provisions for periodically parliamentary approval was also added by the 44th Constitutional Amendment Act 1978. What is are the effects of the national emergency of the Indian political system? The state government are suspended and are brought under the complete control of the center. Suspended कर दिया जाता है. The constitution become unitary rather than federal. The president can either reduce or cancel the transfer of the finance from the center to the states. पैसा को कहाँ पैसा से लेना देना कुछ नहीं है. पैसा कहाँ रुकेगा यार. दो सही है, एक सही है, दो और तीन ही सही दिया हुआ. बताइए. सस्पेंड नहीं करता है. While a proclamation of emergency is in force, the normal fabric of the center-state relation undergoes a basic change. During a national emergency, the executive power of the center extend. ध्यान दें, executive power की बात हो रही है. Executive power of the center extend to the directing any state regarding the manner in which its executive power is to be exercised. किस प्रकार से उसका कार्यपालिका काम करेगा, अब वो सेंटर डिसाइड करेगी. देखिए, साधारण समय में क्या होता है, सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ओनली ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर. However, during a national emergency, the center becomes entitled to give executive direction to a state on any matter में दे सकता है. The state government are brought under the complete control of the center, though they are not suspended. हालांकि उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है. During a national emergency, the parliament becomes empowered to make law on any subject mentioned in the state list. Although the legislative power of the state legislature is not suspended, it becomes a subject to the overriding power of the parliament. Thus, the normal distribution of the legislative power between the center and the state is suspended. Though the state legislature are not suspended, in brief, the constitution becomes unitary rather than a federal. While a proclamation of national emergency is in operation, the president can modify the constitution distribution of revenues between the center and the states. यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा आप, जब इमरजेंसी ऑपरेशन में रहता है नेशनल इमरजेंसी, तो सरकार प्रेसिडेंट जो होता है वो चाहे तो रेवेन्यू मैटर को भी कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर के बीच जो है उसको कुछ बदल सकता है. दिस मीन्स द प्रेसिडेंट कैन ईदर द रिड्यूस कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है ट्रांसफर ऑफ फिनांस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स. Such modification continue till the end of the financial year in which the emergency ceases to operate. Consider the following statement regarding the proclamation of emergency under the Article 356. अब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं. President issue a proclamation only when a governor submits the report the situation that has arisen in which the government of a state cannot be carried out in accordance with the provisions of the Senate Constitution. The proclamation of emergency under the Article 356 must be approved by both the houses of the Parliament within 1 month from the date of issue. दोनों गलत है. देखिए, आर्टिकल 355 imposes a duty on a center to ensure that the government of the state every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution. It is this duty in the performance which the center takes over the government of the state under the Article 356. In the case of the failure of the constitutional machinery in a state, this is popularly known as the president rule. This is also known as the state emergency or constitutional emergency. Article 356 empower the president to issue the proclamation if he she is satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried out on accordance with the provisions of the constitution. Notably, there that president can act either on a report of the government of the state, otherwise too, even without the government's report. A proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of the parliament within the 2 months from the date of the issue. However, if the proclamation of the president rule is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of the 2 months without approving the proclamation, then the proclamation survives till proclamation जो है survive कर लेता है until 30 days from the first sitting of the लोक सभा. जब लोक सभा दोबारा बैठेगा 30 दिन के बाद तक चलेगा ये प्रेसिडेंट सिस्टम. After its reconstitution, provided the Rajya Sabha approves it in the meantime.
Consider the following statement: President's rules in a state has no effect on the fundamental rights of the citizens. President's rules states can be continued indefinitely with the approval of the parliamentary for every 6 months. During the national emergency, Parliament can delegate the power to make law for the state to the President or to any other authority specified by him. सबसे पहली बात, दूसरा स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया, तो दूसरा स्टेटमेंट छोड़ दीजिए ना आप, सीधी सी बात है, इसका सही जवाब होगा एक। ठीक है, क्योंकि तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल्स इन स्टेट हैज नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट of a citizen, while during the national emergency affect fundamental rights of citizens. There is a maximum period prescribed for the operation of the president rule, that is 3 years. Thereafter, it must come to an end and normal constitutional machinery must be restored in the state. On the other hand, there is no maximum period prescribed for the operation of the national emergency. It can be continued indefinitely with the approval of the Parliament for every 6 months. During the national emergency, the Parliament can make laws on the subjects enumerated in the state list only if by itself. That is, it cannot delegate the same other body or authority. On the other hand, during the President's rule, the Parliament can delegate the power to make the law for the state to the President or to any other authority specified by him. ध्यान से सुन लीजिए, प्रेसिडेंट्स रूल्स में पार्लियामेंट कैन डिलीगेट द पावर, पार्लियामेंट ध्यान दें, पार्लियामेंट कैन डिलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट को दे देगा या तो किसी और अथॉरिटी को दे देगा जो उनके द्वारा चुना जाएगा। सो फार अब तक द प्रैक्टिस हैज बीन for the president to make laws for the state in consultation with the members of the parliament from the whole state. Such laws known as President's Act. Which of the following subjected were transferred the parliament from state list to the concurrent list for the second constitutional amendment? Public health, agriculture, education, forest. एक तो शिक्षा था, दूसरा फॉरेस्ट था, तीन चार तो डेफिनेटली था। रही बात तीन चार अगर जानते हैं तो ऑप्शन देखिए ना सर, सी इज द राइट आंसर। Constitution provide a threefold distribution of legislative subjects between the center and the state. लिस्ट 7 पढ़िए पता चल जाएगा, मतलब अनुसूची 7 में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसका कंकरेंट लिस्ट है और 7 शेड्यूल। Parliament and state legislature both can make law with respect to any matters enumerated in the concurrent list. The list has at present 42nd लिस्ट अभी जो वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 47 होता था, लाइक क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, अदर्स। 42nd Constitutional Amendment 1976 transferred 5 subjects to the concurrent list from the state list. That is education, forest, waste measure, protection of wild animals and birds, administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and High Court. Consider the following statement: the President enjoy absolute veto over bills passed by the state legislature which are reserved by the governor for the consultation of the President. Bills imposing restriction on the freedom of trade and commerce can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the President. ऐसा कुछ नहीं है यार, पहला ही सही है, खाली दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। The Constitution empowers the center to exercise control over the state legislative matters in following bills. Governor can reserve certain types of bills passed by the state legislature for the consultation of the President. The President enjoy absolute veto over them. पहला।
Bills on the certain matters enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president. For example, the bills imposing restrictions on the freedom of the trade and commerce. Center can direct the states to reserve the money bills and other financial bills passed by the state legislature for the president's consideration during the financial emergency.